State and nuclear physics. Unit first, crystal structure, lattice translation, vector and lattice, symmetric operation, basis and crystal structure, primitive lattice cell, two-dimensional lattice type system, number of lattice, point group and plane group, three-dimensional lattice types, system number of lattice, points group and space group, index symmetric for crystal plane, Miller indices, simple crystal or structure, NaCl, SCP, diamond, cubic, genus and hexagonal occurrence of nonidial crystal structure, random statics of polyprism glasses, crystal diffraction and reciprocal lattice, incident beam, Bragg's law, experiment diffraction method, Lewis method, rotating crystal method, powder method, derivative of scatter wave amplitude, Fourier analysis, reciprocal lattice vector, diffraction condition, Ewald method, Brism zone, reciprocal lattice to SC, BCC and phase lattice, Fourier analysis of basis of atomic form factor. Solid material. The material and are divided into two parts according to their arrangement of atom or molecules. पहला crystalline solid material, those solid material in which atom or molecules are arranged in their regular and repeated pattern having sharp melting point, called crystalline solid material. Example: quartz, catalyte, etc. In formation of crystalline solid material, the method of material cooled such that it takes a longer time, so that the atoms or molecules occupy their regular and repeated pattern. Non-crystalline material or solid material, amorphous, इसको amorphous material बोलते हैं. Those solid material in which atoms or molecules are not arranged in their regular and repeated pattern, they do not have sharp melting point and called non-crystalline or amorphous solid. Example: glass, coal wire. In formation of non-crystalline solid, the proper time is not provided to the melted material. Atoms or molecules do not occupy their regular and repeated pattern. Definition regarding crystal structure. Lattice point. In a crystal, the position of atoms or molecules is called lattice, or lattice represent the position of atom or molecules. Lattice plane. The plane in which lattice point are lies called lattice plane. Lattice space. The three-dimensional space in which lattice plane are lies called lattice space. Lattice space. Crystal structure. To define any crystal structure, we need lattice point in lattice space, and these lattice point are covered by atoms or molecules known as basis. Thus, combination of lattice point and basis represent a structure. Lattice basis. Crystal बराबर lattice plus basis बराबर crystal structure. To define the pattern of any atom to be needs a translational vector T. The translation vector is defined with respect to some reference point called origin. T बराबर 2a vector plus 3b vector. In three dimensional, T बराबर n1 a vector plus n2 b vector plus n3 c vector. Here n1, n2, n3 are integrals. ABC are primitive vectors, also called lattice constant. Unit cell. The parallelepiped formed by primitive vector a vector plus b vector, b vector, c vector is called unit cell. To study crystal structure, the unit cell is very important because it is the smallest part of whole crystal, which crystal all necessary information of crystal. Bravais lattice. Depending on axial ratio a, b, a ratio b ratio c, and angular ratio alpha ratio beta ratio gamma, there are 7 types of crystal are present in nature. Are
and depending on arrangement of atoms or molecules, there are 4 types of crystal. Depending as a whole, there are 14 types of crystal which are collectively called various lattice cubic crystal. In this type of crystal, the axial ratio A बराबर B बराबर C and angular ratio alpha बराबर beta बराबर gamma बराबर 90. Then the structure of each called cubic structure crystal. The cubic crystal constitute 3 types of lattice: simple, body crystal, phase central, depending on this lattice, cubic crystal is divided into simple cubic lattice and phase central cubic crystal. The structure of these 3 cubic crystal are as followed: simple cubic crystal, body central cubic crystal, phase central cubic crystal. In simple cubic crystal, the atom are founded only the corner of crystal in body central cubic crystal, and one atom at concentrated. In phase concentrated cubic crystal, the atoms are at the corner of crystal and one atom uh, at each face of crystal. Note first, in cubic crystal the lattice parameter are equal, that is A बराबर B बराबर C. Here A comma B comma C are length of crystal along x comma y comma z axis. दूसरा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90. The angular ratio are all equal and perpendicular to each other. अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90. In constant 3 types of lattice only. Tetragonal crystal. In this type of crystal, the crystal axes are perpendicular to the each other. अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 and the two sides are of same length, but third one is different from both in constant, simple and body central crystal. Simple अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90. बॉडी सेंट्रल ए बराबर बी नॉट बराबर सी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90. ऑर्थो अदर बिग क्रिस्टल ए नॉट बराबर बी नॉट बराबर सी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90. इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल द क्रिस्टल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड लैटिस पैरामीटर आर ऑल डिफरेंट. ए नॉट बराबर बी नॉट बराबर सी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90. दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल constitute all 4 types of lattice: simple, body central, phase central, base central. बॉडी सेंट्रल अल्फा नॉट बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90. अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90. बेस सेंट्रल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90. ए नॉट बराबर बी नॉट बराबर सी. फेस सेंट्रल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90. ए नॉट बराबर बी नॉट बराबर सी. Diagonal or rhombohedral crystal. In this type of crystal, the lattice parameter are all equal and the crystal axis are same but different from 90. अल्फा बराबर ए बराबर बी बराबर सी अल्फा बराबर बीटा बराबर नॉट बराबर 90. Now in constant simple types of lattice, hexagonal crystal. In this type of crystal, the lattice parameter are of same length but third is different from both. The two angles are of 90 and third is 120. That is A बराबर B बराबर नॉट बराबर सी अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 गामा बराबर 120. In constant one type of lattice that is simple types. ए बराबर बी नॉट बराबर सी अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 गामा बराबर 120. Monoclinic crystal. In this type of crystal, the crystal axes are called all difference. A not बराबर B not बराबर C and two angles are at 90 but third is different from 90. It constitutes simple types of and base central. Triclinic crystal. In this type of crystal, the crystal axes are all different. A not बराबर B not बराबर C and the angle between two axes are also different. अल्फा not बराबर बीटा not बराबर गामा. In a constant simple type of lattice only. A not बराबर B not बराबर C अल्फा not बराबर बीटा not बराबर गामा.
type of cubic crystal. There are three type of cubic crystal depending types of cubic crystal. There are three type of cubic crystal depending on arrangement of atoms or molecule. Simple cubic crystal. In this crystal, the lattice parameter are equal and the crystal axes are also perpendicular to the each other. Alpha बराबर बीटा बराबर गामा C, alpha बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 and its constituent atom. The molecules at each corner are crystals. Physical property. Number of atom per unit cell. In simple cubic crystal, each corner constitutes single atoms and each single atoms contribute 1/8 of the its to the unit cell. Then due to one atoms each contributes बराबर 1/8, so due to 8 corner atom the number of atoms per unit cell बराबर 1/8 गुणे 8 बराबर 1. The general formula n बराबर 1/8 into n suffix में c. Here n बराबर number of atoms per unit cell, n suffix में c बराबर number of kernel atoms. Packing factor. The packing factor is defined as volume occupied by atoms of unit cell to the volume of unit cell. P बराबर volume of occupied by unit cell बटा के वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. पी एफ बराबर 1 बटा के 4 पाई आर क्यूब बटा के ए क्यूब. फ्रॉम फ्रंट ऑफ एस सी सी फ्रॉम ए बराबर 2 आर, ए बराबर ए बाई 2, पी एफ बराबर 4/3 पाई गुणे ए बटा के 2 का होल क्यूब बटा के ए क्यूब 4/3 पाई ए क्यूब बटा के 8 बटा के ए क्यूब बराबर 4/3 पाई गुणे 4/3 गुणे 3.14 गुणे 1 बटा के 2 8 बराबर 314 3.14 बटा के 6 बराबर 0.52. पी एफ बराबर 0.52. Hence in simple cubic crystal 52% of part of unit cell is filled by atom while 18 parts is empty. Coordination number. The coordination number means number of nearest neighboring atoms. In case of simple cubic crystal, the numbers of nearest neighboring atoms in 6 by considering any kernel atoms as origin. There will be 2 atoms and by considering any kernel atom as origin there will be 2 atoms at long 3 axes positive and negative. The coordinates are plus minus a I cap comma 0 comma 0 0 comma plus minus a I cap comma 0 0 comma 0 comma plus minus a I cap a cap a k cap and ये रही तब तक. In SCC the distance between 2 atoms is a. The example of SCC is polonium. Body central cubic crystal BCC. The crystal in which lattice parameter are all same a बराबर b बराबर c and crystal axes are perpendicular to the each other. अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90. The atoms are found at the corner of the crystal and one atoms will be at the central of the crystal called body central cubic crystal. Physical properties. Number of atoms per unit cell. In BCC the atoms are found at the corner of the crystal and one atoms will be at the corner of the crystal. Since each kernel atoms contribute its 1/8 to the unit cell 2, so due to 8 kernel atoms the number of atoms per unit cell is equal to 1/8 गुणे 8 बराबर 1. Due to central atoms which contribute its holes due to the unit cell, then there will be one atoms also. So total number of per unit cell 1 plus 1 बराबर 2. In the general formula n बराबर 1/8 गुणे n suffix में c plus n suffix में cc. Here n suffix में c number of kernel atom, n suffix में c e बराबर number of central atom. Packing factor pf बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई एटम्स ऑफ यूनिट सेल बटा के वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. पी एफ बराबर 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यू बटा के ए क्यू.
That is BCC 68% of volume of unit cell is occupied by atoms while 32% parts is empty. Coordination number. In case of BCC, there are 8 corner atoms and 1 central atom. By considering central atom as origin, the number of nearest neighbor atoms is 8. So coordination number will be 8. The general coordination of BCC is plus minus a beta 2 I cap comma plus minus a by 2 j cap plus comma plus minus a beta 2 k cap. The distance between two any corner atom from controlled atom बराबर a बटा के 2 अंडर रूट में 3. The example of BCC is alpha ions for which lattice constant is 2.86 phase central cubic crystal FCC. In this crystal, the lattice parameter are same a बराबर b बराबर c and the crystal axis are perpendicular to each other. Alpha बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश. The atoms are found at each corner each crystal and also in each face of unit cell as shown in figure. Physical property number of atoms per unit cell. In FCC, the atoms are found at each corner of the unit cell and also each face of unit cell. So due to 8 corner atom in which each corner atoms constitute its 1 by 8 to the unit cell, then the number of atoms per unit cell due to the corner atom बराबर 1 by 8 गुणे 8 बराबर 1. Since each face atoms contribute 1 by 2 of its to the unit cell, so due to the 6 face atom, the number of atoms per unit cell 1 by 2 into 6 बराबर 3. Then total number of atoms unit cell tends to 1 plus 3 बराबर 4. The general formula n बराबर 1 by 8 गुणे n सफिक्स में c प्लस 1 by 2 n सफिक्स में f. ये मेन फार्मूला है. Where n c number of corner atom, n f सफिक्स में f बराबर number of face atom. Packing factor. In FCC, the packing factor is defined as p dot f बराबर 4 गुणे वैल्यूम ऑफ 1 एटम बटा के वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल. p dot f बराबर 4 गुणे 4/3 पाई r क्यूब बटा के a क्यूब. Here r बराबर रेडियस ऑफ एटम, a बराबर लैटिस कांस्टेंट. फिगर 4r बराबर 8 अंडर रूट में 2, r बराबर a अंडर रूट में 2 बटा के 4 बराबर a बटा के 2 अंडर रूट में 2. देन पी एफ बराबर 4 गुणे 4/3 गुणे पाई गुणे a बटा के 2 अंडर रूट में 2 का होल क्यूब बटा के a क्यूब. पी एफ बराबर 4 गुणे 4/3 पाई गुणे 1/16 अंडर रूट में 2. ये बराबर 4/3 पाई 1/4 अंडर रूट में 2 बराबर 4/12 पाई अंडर रूट में 2 बराबर पाई/3 अंडर रूट में 2. पी एफ बराबर 3.14 बटा के 3 गुणे 1.414. पी एफ बराबर 0.74. दैट इज इन FCC 74% पार्ट ऑफ यूनिट सेल is filled by atoms while 26% part is empty. Coordination number. In FCC there are 8 corner atoms and 6 face atom and by considering any corner atom as origin, there will be 12 nearest neighboring atoms. Hence coordination number is 12. The coordinate number of FCC lattice a by 2 I cap comma a by 2 j cap comma 0 a by 2 I cap plus minus a by 2 j cap comma 0 प्लस माइनस a by 2 I कैप कामा 0 a by 2 k j a by 2 k कैप a by 2 I कैप कामा 0 कामा a by 2 k कैप 0 कामा प्लस माइनस a by 2 j कैप कामा a by 2 k कैप. दूसरे क्वेश्चन में a by 0 कामा a by 2 j कैप कामा प्लस माइनस a by 2 k कैप. The distance between any corner atom and face atom is a by under root 2. Example. The example of FCC is NaCl for which lattice constant is 5.16 गुणे एंगस्ट्रॉम. It constitutes 4 atoms of Na plus and 4 atoms of Cl minus. Hence it have 4 molecules. Interplanar spacing are distance between two constitutive planes.
Let us consider a plane PQR which makes intercept of length PA, QB and RE along x, y, z axis respectively. Consider a perpendicular drawn from origin ON such that it makes angle alpha, beta, gamma from x, y, z axis. Hence their direction cosine will be cos alpha, cos beta, cos since we know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma बराबर 1 from figure using एंगल पी ओ एन cos alpha बराबर क्यू ओ एन बटा के ओ एन बराबर ओ पी डॉट cos alpha ओ एन बराबर पी ए डॉट cos alpha ओ एन बराबर ए बाई एच इंटू cos alpha हियर ओ एन बराबर डी सफिक्स में एच के एल डी सफिक्स में एच के एल बराबर ए बाई एच cos alpha बराबर एच बाई ए डी एच डी सफिक्स में एच के एल सिमिलर cos बीटा बराबर के बाई बी डी सफिक्स में एच के एल cos गामा बराबर एल बाई सी डी सफिक्स में एच के एल यूजिंग cos alpha cos बीटा cos गामा इन इक्वेशन 1 एच स्क्वायर बटा के ए स्क्वायर डी स्क्वायर एच के सफिक्स में एच के एल प्लस के स्क्वायर बटा के बी स्क्वायर डी स्क्वायर सफिक्स में एच के एल प्लस एल स्क्वायर बटा के सी स्क्वायर डी स्क्वायर सफिक्स में एच के एल बराबर 1 डी स्क्वायर सफिक्स में एच के एल कोष्टक में एच स्क्वायर बटा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटा के बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटा के सी स्क्वायर बराबर 1 डी स्क्वायर सफिक्स में एच के एल बराबर 1 बटा के अंडर 1 बटा कोष्टक में एच स्क्वायर बटा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटा के बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटा के सी स्क्वायर डी सफिक्स में एच के एल बराबर 1 बटा के अंडर रूट में एच स्क्वायर बटा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटा के बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटा के सी स्क्वायर इन क्यूबिक क्रिस्टल ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए डी सफिक्स में एच के एल बराबर 1 बटा के क्वेश्चन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटा के ए स्क्वायर की पावर 1/2 डी सफिक्स में एच के एल बराबर ए बटा के अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फाइंड इंटरप्लेनर स्पेसिक फॉर क्रिस्टल हैविंग लैटिस कांस्टेंट 2 × 10⁻⁻10 मीटर एंड मिरर इंडिसेस ऑफ 3 2 1 FCC सॉल्यूशन ये बराबर 42 × 10⁻10 मीटर क्वेश्चन में एच के एल बराबर 331 इन क्यूबिक क्रिस्टल डी सफिक्स में एच के एल बराबर डी 3 2 1 बराबर 4.2 × 10⁻10 बटा के अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 4.2 × 10⁻10 बटा के अंडर रूट में 9 + 4 + 1 बराबर 4.2 × 10⁻10 बटा के अंडर रूट में 14 4.2 × 10 अंडर रूट में 14 × 10⁻10 बटा के 14 बराबर 0.3 × 10⁻10 बराबर 1.12 × 10⁻10 मीटर। कैलकुलेशन ऑफ लैटिस कांस्टेंट लेट अस कंसीडर ए क्यूबिक क्रिस्टल हैविंग लैटिस कांस्टेंट ऑफ ए देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर ए क्यू इफ lambda is density of unit cell and mass of the unit cell is बराबर 2aq rho if we consider m is molecular mass then the number of atoms is unit cell बराबर m बटा के n here n बराबर Avogadro number if mass of each atoms is m then mass of unit cell बराबर m बटा के n गुणे स्मॉल m समीकरण नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 aq रो बराबर m बटा के n गुणे m aq बराबर m स्मॉल m बटा के रो n ए बराबर m बड़का m स्मॉल m बटा के रो n के खाते 1/3 Miller indices to define any crystal plane we need some sets of points denoted by HKL called Miller indices. With the help of Miller indices we can define any plane of unit cell. Procedure to obtain Miller indices. To obtain Miller indices first obtain intercept PA, QB, and RC along x, y, z axis. Then find PA संबंधित QB संबंधित RC. Then obtain P संबंधित Q संबंधित R. Then find 1/P संबंधित 1/Q संबंधित 1/R. Replace Q PQR by HKL. H संबंधित K संबंधित L. Find the ratio of interplanar spacing for the plane whose mirror indices are 100, 110, 111. The interplanar spacing of cubic crystal डी सफिक्स में एच के एल बराबर ए बटा के अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फार 100 प्लेन डी सफिक्स में 100 बराबर ए बटा के अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 बराबर ए
फार 110 प्लेन डी सफिक्स में 110 बराबर ए बटा के अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 बराबर ए बटा के अंडर रूट में 2। फार 110 प्लेन डी सफिक्स में 111 बराबर ए बटा के अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर ए बाई 2। देन द रेशियो ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिफिक डी सफिक्स में 100 इंटू डी सफिक्स में 110 संबंधे डी सफिक्स में 111 बराबर ए संबंधे बटा के अंडर रूट में 2 संबंधे बटा के अंडर रूट में 3 बराबर 1 संबंधे 1 बटा अंडर रूट में 2 संबंधे 1 बटा अंडर रूट में 3 डी 100 डी सफिक्स में 100 संबंधे डी सफिक्स में 110 संबंधे डी संबंधे में 111 बराबर अंडर रूट में 6 सफिक्स रेशियो अंडर रूट में 3 रेशियो अंडर रूट में 2। इन ए क्रिस्टल हुज प्रिमिटिव आर 1.2 एंगस्ट्रॉम, 1.8 एंगस्ट्रॉम, 1.2 एंगस्ट्रॉम एंड ए प्लेन हुज मिरर इंडिसेस आर 231 कट्स इंटरसेप्ट ऑफ 1.2 एंगस्ट्रॉम along x axis. What will be the length of intercept along y and z axis? Solution 1.2 एंगस्ट्रॉम, 1.8 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम सिंस s संबंध के संबंध l बराबर 2 संबंध 3 संबंध 1 1 बटा के p संबंध 1 बटा q संबंध 1 अपान r बराबर 2 संबंध 3 संबंध 1 p संबंध q संबंध r बराबर 1 बटा के 2 संबंध 1 बटा 3 संबंध 1 q संबंध p संबंध q संबंध r बराबर 3 संबंध 2 संबंध 6। देन p a संबंध q b संबंध r c बराबर 3 a संबंध 2 b संबंध r 6 सिंस a बराबर 1.2 एंगस्ट्रॉम, b बराबर 1.6 एंगस्ट्रॉम, c बराबर 2 एंगस्ट्रॉम, पी ए संबंध क्यू बी संबंध आर सी संबंध बराबर 3.6 संबंध 3.6 संबंध 12 पी ए बराबर 3.6 के 1.2 बराबर 3.6 के बराबर 1/2 इंटू बटा 3.6 बराबर 1 बटा के 2 क्यू बी संबंध बराबर 3.6 क्यू बी बराबर 3.6 बटा के 3 बराबर 1.2 एंगस्ट्रॉम। आर सी बराबर 12 के आर सी बराबर 12 गुणे 1 बटा 3 बराबर 4। Diamond structure 3D structure of diamond figure 2D structure of diamonds cubic crystal. The crystal structure of diamond cubic crystal as shown in figure it constitutes two type of crystal, lattice SCP lattice and cubic lattice. We will discuss here about diamond cubic lattice, which is face central type constituting two bases at diagonally in the corner. Out of two bases, one is at diagonal in the corner and another is at 1/4 position from the corner. Therefore, in diamond cubic crystal, a parts from corner and face atoms 4 lattice points are at its diagonal. Due to this region, the diagonal cubic crystal is considered as a combination of two crystal FCC and tetrahedral crystal. In FCC lattice, the packing fraction is found to be 0.74, while in case of diamond cubic it is 0.34. The coordination number is 0.4 due to its diagonal in corner atoms. Example: carbon, silicon, germanium, etc. The number of atoms per unit cell. Due to 8 kernel atoms, the number of atoms per unit cell बराबर 1/8 गुणे 8 बराबर 1 due to face atom which contribute its 1/2 to the unit cell. Then the number of atom per unit cell बराबर 1/2 गुणे 6 बराबर 3 due to 4 diagonally corner atoms which contribute its whole to the unit cell. Then number of atoms per unit cell बराबर 1 plus 3 plus 4 बराबर 8. Hence there are 8 number of atoms per unit cell. Hexagonal close packing structure. The hexagonal close packed structure is shown in figure in consisting two hexagonal close packed C बराबर 1.633 एंगस्ट्रॉम, where A is the length of hexagonal. Each hexagonal constitutes one atoms at its central and one atoms at each corner, and it is same for
Another hexagonal in between these two hexagonal a layer of three atoms in stacked called hexagonal stacked structure. Due to this stacking, the packing fraction is found to be 0, such as in SCP, since there are 12 cardinal atoms, 2 face atoms, top and bottom, and 3 atoms inside the crystal. They are force the number of atoms per unit cell बराबर 12 × 1 = 6 प्लस 2 × 1 = 2 प्लस 3 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 3 बराबर 6. जिंक सल्फेट क्रिस्टल. The zinc sulfate crystal contains same structure as diamond cubic crystal, in which one atom in zinc and another sulfur. Symmetric operation. Thus, operation in which the environment around any lattice plane remains identical, then such operations are called symmetric operation. There are 4 types of group symmetry. Translational symmetry, the symmetry operation in which the position of any lattice point in lattice space remains identical by translational operation. Then such types of symmetry is called translational symmetry. Let us consider the position vector of any lattice point with reference same lattice point is r vector. Is then by operation of translational vector t vector we get the same identical environment, and it is given by the equation r vector plus t vector बराबर r vector. Rotational symmetry are what is symmetry operation. Discuss the rational operation and show that 5-fold rotation symmetry is not found. Under rotational of crystal axis about any plane in lattice, the environment around that plane remains identical, then such operation is called rotational operation, and symmetric is called rotational symmetry. Consider the given figure. There are 6 identical structures which are are 16 to each other, and if we rotate about 16 degree through its construct, then we obtain same identical conditions, so it is called rotational symmetry. From equation 6, n theta बराबर 2 pi, here n is an integral, gives fold rotational, n बराबर 1 fold rotation, n बराबर 2 fold rotation, n बराबर 6 fold rotation, in which n बराबर 5 fold rotation is not. Then by using figure A, cos theta t cos theta फिगर है बी डैश सी डैश बराबर एम क्वेश्चन में बी सी टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा बराबर एम टी 2t cos थीटा बराबर प्लस एम टी बराबर एम टी 2t cos थीटा बराबर एम -1 टी cos थीटा बराबर एम -1 टी बटा के 2t क्वेश्चन डब्बा. सिंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ course is plus minus and maximum value of is minus, then the corresponding to this the value of m बराबर 3, 2, 1, 0, -1 and their respectively angle are 360 degree, r 0 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree, 180. Then from equation 1 n theta बराबर 2 pi, theta बराबर 360 r 0 degree, then n बराबर 1 थीटा बराबर 60 डिग्री, r देन n बराबर 6, थीटा बराबर 90 डिग्री, r देन n बराबर 4, थीटा बराबर 120 डिग्री, r देन n बराबर 3, थीटा बराबर 180 डिग्री, r देन n बराबर 3. Hence from above we conclude that n बराबर 5 is not obtained, hence 5-fold rotation is not possible. Reflection symmetry. The reflection means the mirror image of any structure. The operation in which mirror image of any lattice plane occur about a reference plane in lattice space is called reflection symmetry. 1m1 अगर इसमें 2m मतलब 2 हिस्से में तो 2m 2 बनेगा, इसमें 3m 6m 6m. In the reflection symmetry is noted will is shown when which divided figure into identical half which
are mirror image to of each other is represented by m, and in given figure the combination of reflection with allowed rotation with to possibility one rotational with reflection and other is rotation without reflection. Since there are 5 allowed rotation and combination of gives 10 figure 1 comma 1 mm, 2 comma 2 mm, 3 comma 3 mm, 4 comma 4 mm, comma 6 mm. Here the number of representation type of rotation. The first and represent plane parallel to rotational axis, and second m represent the perpendicular to the principal axis. Inversion symmetry. Inversion symmetry. Inversion is point operation in which we found same identical points. Consider a lattice point and position vector r vector, and its same times identical point is obtained at minus r vector. Hence it is called inversion symmetry. Point group and space group symmetry. The point symmetry operation and rotational symmetry reflection and inversion, while translational and skew axis of symmetry are space skew symmetry. This symmetry operation use translational operation and point operation. There are 32 points group symmetry. In a crystal there are 17 and 230 space group found in 2-dimensional and 3-dimensional respectively. Skew axis of symmetry. In this symmetry operation the rotational operation is combined with translational operation parallel to the rotational axis. The main properties of space symmetry are as follows. If space group is known as the symmetric of crystal structure can be specified completely. The space group collection of are symmetric element. The space group through its symmetry element determine the position of equivalent point. X-ray diffraction XDR. XRD stand for X-axis diffraction, and by this method we can obtain the crystal structure. So XRD is an important phenomena. When X-ray incident over a crystal plane, then the energy of X-ray is observed by crystal atom, and therefore they starts vibrating about their mean position. As we know that every exact or discrete particle radiant electromagnetic radiation. So electrons or crystal atoms also radiate electromagnetic radiation in all possible directions, and incident of photographic film. So we get crystal structure. The wave crystal of incident X-ray cause up to cases. If the wavelength of incident X-ray is quite large and compared to dimension of crystal, then all secondary emitted radiation will be same phase, so diffraction pattern will not opt in. दूसरा, if the wavelength of incident X-ray is comparable to dimension of crystal, then all secondary emitted radiation will be out of phase. So construction and destruction pattern is obtained, which will give diffraction pattern. Bragg's diffraction law. The Bragg's diffraction law is an important law to obtain diffraction pattern from crystal plane of crystalline material. This equation gives the relation between inner planar specific angle of incident, glazing angle, order of diffraction, and wavelength of incident radiation. Incident ray, emitted ray. 2D sin theta बराबर n lambda. Here d बराबर interplanar spacing, theta बराबर glazing angle, n बराबर order of diffraction, lambda बराबर wavelength of incident. To establish Bragg's diffraction relation, consider two-dimensional lattice as you are separated by distance d sufficient HKL. Here HKL are Miller indices of plane. If theta is
angle of incident, then the path of diffraction between X-ray 11 dash and 12 minute 11 minute and 12 minute from equation from using त्रिभुज CAB CB बराबर d sin थीटा, अगेन फ्रॉम त्रिभुज BAD BD बराबर d sin थीटा, सो पैथ डिफरेंस C बराबर CB प्लस BD बराबर d sin थीटा प्लस d sin थीटा बराबर 2d sin थीटा 2d sin थीटा बराबर n lambda. Since we know that for X-ray the path difference is integral multiplus of wavelength, so 2d sin theta बराबर n lambda डबल वन. हियर डी सफिक्स में एच के एल बराबर 1 अपन के एच स्क्वायर बटा के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर बटा के बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटा के सी स्क्वायर के पावर 1/2 फॉर क्यूबिक क्रिस्टल ए बराबर बी बराबर सी. डी सफिक्स में एच के एल बराबर ए बटा के अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. Lewis method. In this method, the same relation is stabilized as given by brackets in diffraction law. The methodology to obtain the relation in quite difference. When the crystal illuminated by X-ray, then after absorption of radiation, the crystal vibrate at their mean position and emitted X-ray beams of same frequency. The emitted X-ray given incident on photograph film and diffracts spots appears at photography film. The arrangement of these spot is regular and repeated types. The crystal structure of crystal system mathematical treatment 2D and 2 figure. As shown in figure, the two structuring central A and B which are separate by distance r vector. Here n1 cap is the direction of incident X-ray, and after scattering from A and B, the X-ray is scattered in all direction. Here n2 cap is direction of scatter X-ray. In between n1 and n2 the angle of 2 theta which is shown in figure A. Describe figure B. To stabilize the relation for X-ray diffraction, the path difference between incident and emitted X-ray, path difference बराबर PA PB बराबर r n1 कैप माइनस r वेक्टर n2 कैप बराबर r वेक्टर क्वेश्चन में n1 कैप माइनस n2 कैप बराबर r वेक्टर n कैप वेक्टर. हियर n वेक्टर रिफ्लेक्टिंग प्लेन n वेक्टर n1 to n2. As we know that phase difference बराबर 2 पाई बटा लैम्डा, path difference in our case path difference बराबर 2 पाई बटा लैम्डा क्वेश्चन में r वेक्टर into n वेक्टर. The above relation is a general orientation. If we consider three-dimensional case, and the phase difference becomes 2 पाई बटा लैम्डा क्वेश्चन में a वेक्टर into n वेक्टर बराबर 2 पाई h डॉट बराबर 2 पाई n के 2 पाई बटा लैम्डा बराबर b वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर 2 पाई k डैश बराबर 2 पाई n के 2 पाई बटा लैम्डा क्वेश्चन में c वेक्टर into n वेक्टर बराबर 2 पाई l डैश बराबर 2 पाई n l. Here h dash comma k dash comma l dash are three integrals obtained by Miller indices h comma k comma l, and these integrals are differ by hkl by common integral n. To find Lewis equation, we have defined q dot a dot n वेक्टर डॉट n वेक्टर क्वेश्चन में b वेक्टर डॉट n वेक्टर दूसरे क्वेश्चन में c वेक्टर डॉट n a वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर a n cos अल्फा, b वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर b n cos बीटा, c वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर c n cos गामा. हियर cos अल्फा कामा cos बीटा कामा cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्रिस्टल एक्सिस. एज सो वी नो दैट n बराबर 2 sin थीटा, देन a वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर 2a sin थीटा cos थीटा, b वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर 2b sin थीटा cos बीटा, c वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर 2c sin थीटा डॉट cos गामा, देन 2 पाई बटा के लैम्डा कोष्टक में 2a sin थीटा इंटू cos अल्फा बराबर 2x n h 2 पाई बटा के लैम्डा कोष्टक में 2b sin थीटा इंटू cos बीटा बराबर 2 पाई n के 2 पाई बटा के लैम्डा कोष्टक में 2c sin थीटा इंटू cos गामा
बराबर 2h पाई n l, then 2a sin theta into h by a d suffix में h k l बराबर n h lambda 2 d suffix में h k l sin theta बराबर n lambda. The same relation is obtained by putting the value of cos beta and cos gamma in other equation. In other two equations. The powder method. It is most important method to produce diffraction pattern of X-ray crystal. In all previous method, it is necessary to grow a single crystal, but in this method a single crystal is obtained by crushing a polycrystal material so that powder of unit cell of the crystal is obtained. Therefore, in powder method, the crystal are distributed in all possible directions so that they constitute all possible crystal plane orientation in space. Essential parts of experimental sample. The sample will be in powder form so that unit cell are randomly oriented in all directions in space, and this sample is kept in a sample holder. The sample holder may be capillary tube or any gas tube which is formed by non-diffracting material and suspended by fine wire and elastic string in diffraction chamber. Source. The source is used to produce monochromatic X-ray and it will give diffraction chamber. The diffraction chamber is special in n constituting sample at its center to which X-ray incident with the help of Debye Serrer camera. Diameter in more than length. When X-ray incident in crystal through camera, then diffraction pattern is obtained at photographic film which is filtered inside the spherical shape. Working principle. When monochromatic X-ray beam from source in make to incident over her powder sample, then due to various crystal plane of crystalline material which are oriented in all directions, the diffraction pattern is obtained in very symmetric way in spherical shell on photographic film. The diffraction pattern from cones whose vertex is at the sample, the remaining X-ray transmitted through the ends of diffraction chamber as shown in figure. This is the figure. Debye crystal, X-ray rotating crystal method shown is सब figure सब. Rotating crystal technique is one of the most important experiment to obtain diffraction pattern from crystalline material. In this method, a single crystal is obtained by specially crystal growth technique of order of millimeter cube and placed over rotating bench so that the crystal can rotate about any reference axis. When monochromatic X-ray incident over rotating crystal, then the diffraction pattern from various crystal plane parallel to rotating axis obtained on screen. The diffraction pattern of the crystal which are lies in plane of incident X-ray can not observe clearly. This is because the intensity of incident X-ray dominated over intensity of diffracted X-ray. Since the crystal plane are defined in terms of Miller indices S, K, L, then from diffraction pattern those axes which are parallel to the rotating axis, their Miller indices will be 0. For example, consider the axis of crystal plane which is parallel to the rotational axis, then diffraction pattern is obtained for the plane whose Miller indices are H, K, 0.